Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone world over, all our brothers and sisters across the globe, wherever you are. We extend you a green morning, green afternoon, and green evening. It's wonderful to meet you on Tuesday, 24th of January, 2023 at 8 p.m. India's time. Now, ladies and gentlemen, today is something very important day as well of the United Nations. And at the same time, we also are bringing something very interesting for all of you. That's Digital Inspirational Lab. Dil ka D for digital, I for inspirational, L for lab. So Digital Inspirational Lab, that's what we are going to talk, and we are going to move ahead. We extend you a very warm welcome on behalf of ICSI, International Chamber for Service Industry, because this is a platform which connects all the non-resident Indians from world over for development of India in all respects, through research, through innovation, through collaboration, through service industry and education partnership. Besides that, overall service industry growth, which can take place in India. Our focus in the GDP, in the economy, is towards services sector. So hearty welcome to all of you. Pleasure to meet you. Thank you very much for joining us. Let's move together in today's journey, where something very interesting we are going to discuss. Quick, sharp 10 to 12 minutes program today. January 24th, it's a United Nations International Day of Education. And you must appreciate that the International Day of Education 2023, the theme is to invest in people, prioritize education, and that is the theme. That means to invest in people means capacity building, human development, human resource development, human innovation, invention, whatever best we can do, let's invest in people. And secondly, can we give priority to education sector? That is the theme on 24th of January, 2023 by the United Nations. And we all know under the Sustainable Development Goals, goal number 4 is quality education, which we take care of. Let's talk about quality education. Let's talk about Sustainable Development Goals as well. Now, when we talk about quality education, goal number 4 of Sustainable Development Goal, there are total 17 goals. If you go 4.1, that's quality primary / secondary education for all. 4.2, early childhood and pre-primary education. 4.3, equal access to TVET and higher education. That means the vocational education training. Then skill for decent work, gender equality and equal access for all, youth and adult literacy, sustainable development and global citizenship, safe and inclusive learning environment, scholarship in higher education for deserving candidates, and professional development of teachers. Teacher development is very important, which we all have to consider. Now, let's move ahead. Honorable Prime Minister always says, Amrit Kal, how India would be in 2047. Let's go 3 years ahead. The key focus areas for education 2050. When you look at United Nations, what exactly is their focus? Advocate for the right to higher education, address the barriers that limit participation, open up access to the knowledge, empower the next generation, strive for higher education to be more relevant to our day-to-day life, become a future thinker. You got to think about future. And when you talk about skills, you need advanced training, you need competence, you need knowledge, you need learning, experience, ability, and growth. All that is needed in skills. Skills are important for growth at all stages of life. And that's why nowadays everybody says there should be lifelong learning. Skills included in the professional profile, endorsement and tests added. And when you have the education which is skill-based,
system to define a single unit of learning and managing and tracking the skills. Growth mindset. It's very important. If you want to grow in life, it's something very, very important, which you all have to take into consideration. Now, the World Economic Forum, they keep meeting at the Davos. They met from 16th to 20th. You must go through the YouTube channel and try and just log in over there and see World Economic Forum, skills education, skill-based education, skills and education, and what exactly the World Education or World Economic Forum has conveyed with regard to education and skills. Okay. I often keep telling everybody that in our education ecosystem, we have got physics lab, we have got chemistry lab, we have got bio lab, we have got computer lab, math lab, micro lab, language lab, incubation lab, all kind of labs are there. Why not inspirational lab? That means something which motivates me, which kicks me, which increases curiosity in me, and which tries and brings something very, very innovative, that I become more curious to learn. I become more the creative. I become more imaginative. I become more innovative. And there is a design thinking, critical thinking, adaptive learning, immersive learning, project-based learning, nature-based learning, and technology-based learning. All that has to take at all levels, whether at school or at college or at university or at ITI or at Polytechnic, or even all the skill centers which are being set up. This is something very important, which we all have to take into consideration. In 21st century, our chamber has also moved. In 2019, we were harping on brick and mortar finishing school, where we were talking about personality enhancement, communication skills, connecting skills, creative thinking, critical thinking, logical thinking, analytical thinking. But this was all on ground, brick and mortar. सब कुछ एक चार दीवारी के अंदर कमरों में, फिजिकल कमरे जो बने हुए, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है. You got to adopt technology if you really want to progress in your life. When we talk about inspirational lab, बहुत सारी चीजें हैं. It depend करता है कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बीएड कॉलेज में, वोकेशनल कॉलेज में, टूरिज्म कॉलेज में, हॉस्पिटैलिटी कॉलेज में, या स्कूल में, किसी भी जगह अगर आप लेते हैं, आप पर्सनालिटी पे तो काम करते ही करते हैं, उनके कम्युनिकेशन पर भी काम करते हैं, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी पर भी काम करते हैं, क्रिटिकल एंड कोलैबोरेटिव थिंकिंग पर भी काम करते हैं. स्टोरी टेलिंग क्यों नहीं होता एजुकेशन में? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको याद होगा पुराने जमाने में नाना नानी की कहानियां, दादा दादी की कहानियां, मालगुडी डेज की कहानियां, आर के लक्ष्मण के कार्टून. और हमारे एजुकेशन सिस्टम में म्यूजिक, डांस, फन, ह्यूमर, हैप्पीनेस, ऑल दैट शुड बी देयर. और नेचर के साथ पढ़ें. गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली, कली कली, गली गली. Love for nature and happiness, organic living, nutrition based living, waste to resource management, water management, yoga, health, mental wellness, physical wellness, equity and diversity in education. और हर चीज प्रोजेक्ट बेस्ड होनी चाहिए. एजुकेशन का एक पर्पस है. व्हाई शुड आई स्टडी ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट? अब जो हमारी डिजिटली इंस्पिरेशनल लैब है, जिसको हम दिल कहते हैं, वो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर. दिल पे बहुत कुछ है. दिल दिल दिल. अगर आपको याद हो, गुरदास मान जी ने अपनी जिंदगी का गाना गाया था, दिल दा मामला है, दिल दा मामला है, कुछ दे करो सजन. उसी तरीके से दिल दिया, दर्द लिया, दिल ने फिर याद किया, दिल ने पुकारा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल दे के देखो. दिल की बहुत सारी बातचीत होती है. हमने दिल को ही खोलकर आपके सामने रख दिया. दिल का मतलब DIL. डी से डिजिटल, आई से इंस्पिरेशनल, एल से लैब. दिल की लैब. आपकी दिल की जो धरोहर है वो बाहर आनी चाहिए, खुलनी चाहिए. और कस्टमाइज्ड एंड डिजिटाइज्ड, totally digitalized training at all levels at school and higher education, youth के लिए, teachers के लिए, educators के लिए, counselors के लिए, technocrats के लिए. हर एक को mental wellness चाहिए, personal wellness चाहिए, professional wellness चाहिए, social wellness चाहिए, and unlearn to relearn. Upskill yourself every day, every day.
augmented reality, virtual reality, and IoT, Internet of Things, ICT, all that is the integral part of education. टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लीजिए, आप सुखी रहेंगे। और जब आप इंस्पिरेशनल लैब की बातचीत करते हैं, सो वी आर फोकसिंग ऑन सॉफ्ट स्किल, वी आर फोकसिंग ऑन लाइफ स्किल, वी आर फोकसिंग ऑन ट्रेड स्किल्स, एंड वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन ग्लोबल स्किल्स। आपको ग्लोबली एक्सेप्टेबल होना है। आप बेशक से भारत में काम करिए, लेकिन अपने आप को ग्लोब के लिए तैयार कीजिए। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एजुकेटर्स, टीचर्स, काउंसलर्स, टेक्नोक्रेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब तैयार हो जाइए। और हमने अपने एजुकेटर्स के माध्यम से, अपने यूथ के माध्यम से, अपने डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है हमारा, उसके माध्यम से हम एक ऐसी डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब का निर्माण करें जहां पर एजुकेशन और स्किल दोनों ही रेलिवेंट हो हमारी जिंदगी में। एंड देयर शुड बी अ परफेक्ट वेलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर हैप्पी लिविंग ऑल द टाइम्स। इंस्पिरेशनल लैब की बहुत ज्यादा जरूरत है एजुकेशन और स्किल के इकोसिस्टम में। और जो एजुकेशन है, इट हैज टू बी मेड रेलिवेंट टू आवर डे टू डे लाइफ। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो एजुकेशन है, इट शुड बी एप्लीकेबल इन माई डे टू डे लिविंग। सुबह उठने से रात के सोने तक मैं जो कुछ करता हूं, वो मेरे पढ़ाई से कहीं ना कहीं संबंधित होना चाहिए, छूना चाहिए। बेसिक्स ऑफ फाइनेंस मुझे आनी चाहिए, इंश्योरेंस आनी चाहिए, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन आना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि जमीन के अंदर कौन से पौधे उगते हैं, जमीन के ऊपर कौन से पौधे उगते हैं। ये जो वेबिनार आपके लिए जूम पर आ रहा है, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल and relevant to everybody whosoever is working in the education ecosystem. Whether you are a teacher, whosoever you are, that is the way you have to take care of it. और देखिए, न्यूट्रिशन की किसको जरूरत नहीं है, नरिशमेंट की किसको जरूरत नहीं है, खुशी किसे नहीं चाहिए। बेसिक्स ऑफ हेल्थ, बेसिक्स ऑफ वेलनेस, फिटनेस, योगा, मेडिटेशन, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छे विचार रखिए, औरों के लिए भी अच्छा सोचिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। आपको बेसिक इंडियन लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए, लीगल सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। राइट्स के साथ साथ आपको ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपनी कंट्री के बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। आपको सिविक एमिनिटीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको सोशल नॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑल दिस शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई डे टू डे लिविंग एंड माई एजुकेशन इकोसिस्टम। दूसरा, किचन में खाना बना रहे हैं, थोड़ी सी चोट लग जाती है, आपको फर्स्ट एड का पता होना चाहिए, आपको इमरजेंसी सर्विसेज का पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होनी चाहिए कि क्या खाने से मैं ठीक रहूंगा या रहूंगी, मेरा शरीर ठीक रहेगा। अपने घर में एक 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 बूंद पानी की कैसे बचाएं, क्या टेक्निक्स अपनाएं, वाटर सेविंग, वाटर मैनेजमेंट, उसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट, उसी तरीके से इनोवेटिव टेक्निक्स टू ओवरकम फियर, आइसोलेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। लोग मरे जा रहे हैं डिप्रेशन से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से। उफ, बड़ा काम है, उफ मैं तो थक गया, उफ सुबह से काम कर रहा हूं। ये सारी चीजों का आभास कब होता है? when you don't enjoy your work. Why skills? Why competencies? Why vocational education? Why capabilities? Why they should be integrated in our education ecosystem through music, through dance, through fun, through games, through humor, through happiness, through talent display, through creativity, curiosity, encouragement. हर एक को आप हर स्टेज पे आप एनकरेज कीजिए। आप किसी को 30 दिन के लिए एनकरेज कीजिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत सुंदर बोलते हैं, आप बहुत प्यारा बोलते हैं, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, आपकी वाणी कितनी अच्छी है, खुदा ने आपको नवाजा है, खुदा ने आपको तराशा है। ऐसे आप किसी को 30 दिन बोलकर देखिए, 31वें दिन उसको महसूस होगा, ओ माय गॉड, आई एम ए गुड ओरेटर, आई एम ए गुड स्पीकर, आई एम ए गुड टेक्नोक्रेट। जिस चीज में भी आप किसी की मदद करना चाहते हैं और उसे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आप एनकरेज कीजिए। एनकरेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन लाइफ। और दूसरा, टाइम बड़ा लिमिटेड है इस प्लेनेट के ऊपर, टाइम बहुत लिमिटेड है हर एक के लिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं परमानेंट यहां पर हूं, ये एक टेम्परेरी सफर है। और दूसरा, आपकी जो एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है,
उसको आप कैसे मैनेज करें, कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ इस्तेमाल करें। और दूसरा, खुश रहने के अंदर आपकी संस्कृति, आपकी कला, आपकी आर्ट, आपकी क्राफ्ट, आपका कल्चर, आपकी हेरिटेज, आपकी वैल्यूज और आपकी जिंदगी में एम्पथी औरों के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए। और उसी के साथ साथ कोरोना के बाद सबको समझ आ जाना चाहिए कि जो B2B है वो बैक टू बेसिक्स ऑफ लाइफ है, ना कि बिजनेस टू बिजनेस है। हाउ टू ब्रिंग हार्मनी विद नेचर इन माय लाइफ, हाउ टू हैव हैप्पी लिविंग। मैं अपनी जिंदगी के हर पल को खुशनुमा कैसे बनाऊं। एंड याद रखिए, देयर इज नो प्राइस टैग टू योर हैप्पीनेस, योर मेंटल हैप्पीनेस। आइए दिल से दिल की बात करें, आइए दिल से दिल को जोड़ें, आइए दिल को उतार कर हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में रख दें। क्योंकि दिल है D फॉर डिजिटल, I फॉर इंस्पिरेशनल, L फॉर लैब। डिजिटल इंस्पिरेशनल लैब, दिल से दिल तक इनोवेशन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी बेस्ड joyful learning with empathy. That is something very important. This digital inspirational lab is for youth, it's for teachers, it's for educators, it's for counselors, it's for the entire education ecosystem. So ladies and gentlemen, आइए हम इकट्ठे चलते हैं। मेरा हाथ पकड़िए, मैं आपका हाथ पकड़ता हूं। मुझे महसूस कीजिए जैसा मैं आपको महसूस करता हूं। पकड़िए मेरा हाथ, आइए आइए पकड़िए। Whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. आज से प्रॉमिस कीजिए कि आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप पॉजिटिव बातें करेंगे, आप अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे और आप औरों की भलाई के लिए भी सोचेंगे, तो आपका भला अपने आप होता जाएगा। Let's come together. Let's make education and skills relevant through digital inspirational lab. इसी के साथ आज हम 1793 वेबिनार्स कंप्लीट करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ आइए 1 मिनट की आपको इंस्पिरेशनल लैब दिखाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर यात्रा में आगे चलते हैं। Welcome to the Inspirational Lab It of is ICSI Finishing your School for Service Industry. inspirational The International lab Chamber for of Service Industry, or ICSI. You got to enjoy ICSI, brought on it. ground India's You got to first feel finishing it. school for the It's service right for industry you. in Since 1994. 1994, However, it ICSI has is become an working inspirational for lab the and turned inspirational completely lab for digital you. Earlier post-pandemic. it was finishing school. Here, During the the students pandemic, link everything academics has gone beyond digital, syllabi. beyond They journey academics. from You effective got to focus communication on to connecting connecting skills, skills, curiosity to creativity, creativity, along and then with at the soft same skills, time, soft life skill, life skills, skills, and technical technical skills. skills. All that is very Health and important. wellness Your is health and another wellness is important also very component important of for the all of us. Inspirational Lab And at at the same time, ladies and ICSI. gentlemen, we wish to Inspirational share Lab with you is an at initiative all of stages, you ICSI need to develop a digital holistic approach in inspirational lab, education irrespective transformation. you're in Visit school, you're in college, icsiindia.in. you're in university, wherever you are, we need digital inspirational lab in our life. I extend a very hearty welcome to each one of you. आइए हम भारत के रिपब्लिक डे से पहले 26 तारीख को भारत का गणतंत्र दिवस आ रहा है। उससे 2 दिन पहले हम सब लोग इकट्ठे मिलकर एक शपथ लें कि हम एक ऐसी इंस्पिरेशनल लैब भारत में इनोवेटिव वे में लेकर चलेंगे, डिजिटल वे में, जिससे पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से we would be spreading the sprinkling effect and the fragrance of positivity, creativity, innovation, and of course, collaboration with each other. No more competition, it's collaboration. आइए हम सब इकट्ठे चलते हैं, हम सब इस यात्रा में इकट्ठे चलते हैं और एक ऐसी इंस्पिरेशनल लैब का निर्माण करते हैं जो हमारे आने वाले भविष्य में हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे एजुकेटर्स को, हमारे ट्रेनर्स को, हमारे काउंसलर्स को, हमारे कोच को, हमारे मेंटोर्स को इतना सक्षम बनाए that they all should do wonderful on this particular planet. With these words, let me convey my YouTuber. I convey my deep gratitude and thanks to Sakshi Chauhan, all the way from Uttarakhand, Mohit Chaudhary, all the way from Pathankot,
Dr. Nisha Singh from Sector 20, B.Ed College, Chandigarh. Anand Mukherjee, Babu Moshai, Kolkata, how are you? Julie Subba ma'am from Manipur. Vamuzo Vero from Nagaland. Nisha Agrawal, Nishank Maurya, Pankaj Tripathi, Esvosa is the complete group from Imphal of almost about 500 to 600 students. Yogesh Kumar Upadhyay he's a wonderful person, very knowledgeable. He can do a lot for the country because as a president of the ISTD, he has done commendable work. And it was a great pleasure to know him, to learn so many new things which he has brought into the fold as far as capacity building of teacher empowerment, youth motivation, youth inspiration is concerned. He was traveling to Rajasthan. I'm pretty sure he must have reached back home. We'll get connected with him soon and we will work out the strategy, what all can be done. And Nancy Sangma, Shillong, hearty welcome. And our Subhash Verma ji, travel, wellness, and beyond. That is good evening to everybody from his side. And Yogesh ji is writing excellent insight. Kim Kipkin from Nagaland, Nisha ji. Inspirational lab is the need of the hour, especially for Indian students. Majority of the Indian students lack in communication and innovation. So true. Sakshi, absolutely right. Travel and wellness beyond Subhash Verma ji. Absolutely. Education must be holistic and inclusive of all elements of life. Nisha ji, yes, we need to rewire. And then comes Subhash ji, Aadhar, Shubh Vichar, and Shuddh Vyawar. Ah, wow, great. ये मेरे को लगता है मोदी जी से इंस्पायर्ड हैं क्योंकि इनका बड़ा रिदमिक आता है मोदी जी की तरह. Anand Kumar Bora from Assam. Hearty welcome. Prachi Kalita, Rosie Chakma, Rishi Mohan, Laishram Damini, Claudia Lingua, and Lakyat Gohain. And of course, Dr. Nisha ma'am. There's a book called Hints for Self-Culture, written by Hardyal, a must-read for all. Its content resonate with thoughts that you are sharing right now. Thank you very much, ma'am, for sharing that. And Deepa Hazarika, greetings from Assam. All the dignitaries, those have come and those have joined on this platform with us today. I'm so grateful to all of them. Happy living, happy stay. Look forward to meeting you tomorrow evening at 8 p.m. once again. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और देखिए, प्रयास कीजिए कि औरों के लिए आप अच्छा क्या कर सकते हैं. वो याद है आपको मणिकर्णिका का, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए. जय हिंद. कल रात को 8 बजे हम फिर मिलेंगे दिल से दिल की आवाज देते हुए. कहते ना वो, दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा. गाया करो. Music is very good for ears, for heart, for soul, for happiness, and for education, and for skills.